हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस इंडियन गेमिंग चैनल पे। तो आप सब लोग बने रहे हमारे इस इंडियन गेमिंग चैनल पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जी हाँ, अभी तक आपने लोगों को देख लिया होगा आई विन 999 डायमंड कैसे और कैसे उससे विन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं स्पिन लगा रहा हूँ और अब डायमंड देख सकते हैं मेरे 10,651 है। तो इसे कैसे मैंने विन किया, तो चैनल पे बने रहे सब। आप सबको मैं बताऊंगा कैसे इसे विन कर सकते हैं और हाउ कैन पॉसिबल दिस। तो बने रहे हमारी इस चैनल पे। तो यहाँ पे मैं स्पिन लगाया जा रहा हूँ। तो आगे आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं हिस्ट्री की ओर। पहले थोड़ा स्पिन लगा लूँ, कुछ अच्छा खासा मिल जाए यार। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या करे। नहीं, एक बार तो 999 डायमंड मिल गए, फिर भी देखो 99 डायमंड मिले फिर से। अब एक और स्पिन लगाते हो, क्या मिलता है। बस बस बस, अब रुक जा भाई, रुक जा। बचे के जान लेगा क्या, कुछ मिल तो नहीं रहा फिर भी। चलो देखते हैं आगे हमारी हिस्ट्री। Rather than carrying the melody or chanting in Latin or something, the choir will oftentimes be used in the background to provide a new texture to the piece with syncopated rhythmic figures or harmonic pads. In Dark Souls, Sakuraba succeeded in crafting a unique musical identity for the game's world that made frequent use of choral textures in this way. Check out how the syncopated rhythmic accents in the male choir part underscore the frenetic string melodies in the Taurus demon theme. In the more classically oriented pieces on the Golden Sun soundtrack, we can hear the same approach. The game's title theme uses strings for the melody and bass parts while filling out each chord with the GBA's closest approximation to a choir for the inner voices. Also note here the use of timpani driving the bass line, an orchestration choice that often appears in Dark Souls boss themes as well. Timpani is typically used in these kinds of fantasy game scores more sparingly, either marking each chord change with a single hit or playing a rolling crescendo into a new section. If I had to guess, I'd think that Sakuraba's expanding on the timpani's role is due to its power and presence in the orchestra resembling the power and presence of the electric bass and drum set combo that make up the rhythm section in a rock band, a setting that Sakuraba, by his own admission, is more familiar with. This rock influence comes through all over Sakuraba's work and can usually be seen in Golden Sun via the rock rhythm section of bass and drums underpinning the orchestral colors that carry the melody and harmony. In the Venus Lighthouse theme, a steady driving 8th note bass line and drum set backbeat are combined with a horn melody and choir laying out the harmony. Beyond the instrumentation, though, you can see an interesting blend of rock and classical in the compositional style of the piece as well. The melody is mostly pretty simple, focusing on the root and fifth of each chord in a straightforward style not uncommon to rock music. The chords leading up to the tonic at the end of this section, this D to E to F sharp minor, make a flat 6, flat 7 to 1 progression that is basically ubiquitous in this kind of rock style. We'll see a lot more of this later. However, the 5 sus to 5 move, typically associated with a classical style, is seen here and used all over Sakuraba's other work as well, and this Picardy third ending to the A section as the D to E moves up to a surprise F sharp major is obviously classically inspired. For an example of Sakuraba's writing in a pure rock style, let's check out one of the Game Point Breakpoint themes from the original Mario Tennis.
Just taking the first 16 bar section of the tune, we see that all but 2 bars of it are comprised of either a 1, flat 6, or flat 7 chord. These common chord आप में से structures किसी and ने simple स्पिन लगाई और chord आपको मिला तो portfolio प्लीज़ stand कमेंट the way सेक्शन में of the ज़रूर real बताना। purpose of this और हाँ, piece, writing. कैसा लगा The मेरा sheer कलेक्शन energy generated by कलेक्शन the अच्छा fast हो tempo, तो the फिर driving भी bass and कमेंट drum करना, parts, लाइक and the शेयर और heavily सब्सक्राइब ज़रूर syncopated करना synth भाई and लोग। आपको synth जो भी beats. वीडियो चाहिए I think मैं the आपको real बना के benefit दे of दूंगा। blending लॉन्ग rock टाइम and बाद ये classical वीडियो musical डाली है conventions in this way और is really able to have the best कलेक्शन of both मेरा। worlds, combining और powerful आपको किसी rhythmic को 10,000 intensity डायमंड or मिले कि colorful नहीं मिले harmonies and तो orchestration. आप सब For an प्लीज़ example, check out कमेंट Felix's करके battle ज़रूर tune for the बताना। Golden Sun और कैसी piece, लगी The वीडियो Lost Age. वो भी A कमेंट full सेक्शन में ज़रूर rock-rhythmic बताना। section प्लीज़ sets up a लाइक शेयर और driving सब्सक्राइब 12/8 groove करना with a मेरे भाई consistent लोग। rhythmic चलो tension अभी के लिए divided बाय over बाय, against टाटा, straight सी short यू। note rhythms is चलो बाय। used to propel the song forward with a level of adrenaline perfectly suited for a battle theme. The harmony is once again यार almost चलो अब entirely made up of कुछ 1, गन भी flat परमानेंट 7, कर लेते flat क्योंकि 6, and इतने 5 डायमंड है chords तो in a क्या minor करें। key, and the यार melody फिर once कोई again क्या मेरा evolves अकाउंट mostly 3-4 लोगों towards के पास है predictable तो chord फिर tones, but string वो melody क्या and डायमंड live वेस्ट कर adds देगा, fill out the गिफ्ट कर rock लेगा तो वो instrumentation, यही करते and हैं। we see a चलो full स्टार्टिंग करते हैं। modulation to a new चाहिए key गने every गने 8 की bars or so. This is कितनी स्पिन facilitated लगाने के by बाद the मुझे मिलेगी। extremely classical चलो आप move कमेंट of सेक्शन using में a ज़रूर diminished बताना। 7th चलो chord 10 स्पिन built off लगाई of the है, leading tone of the new key to एक set एम up the फोड़ेगा। shift. चलो उसी में बाय कर लेते हैं। इसका जो स्क्रेट ओपन किए कुछ ना मिला। चलो फिर से ट्राई करते हैं कि 10 के रेट ओपन हुए और अब फिर से बारी है 10 की। ना कुछ नहीं, तो 10 पहले 10 अभी 20 हुए। इसे भी ओपन कर लेते हैं। चलो वोल्ट में जाके क्रिएट में जाके ओपन कर लेते हैं। तो हो गया 20 रुपया, कुछ ना मिला, फिर भी Sakuraba's परमानेंट work नहीं isn't all हुई। फिर bombastic से boss चलते हैं, themes, though. The Elemental चाहिए ही Stars चाहिए theme from the original Golden Sun sees a lot of the किसी conventions भी of हाल में। Sakuraba's तो writing ट्राई that we've करते हैं। explored so far used to create अरे this क्या ये dreamy, ओपन हुआ ethereal sound 31 through दिन clever के लिए use of मिले delay. The हुए piece 21 opens और with फिर 2 से layered 10 synth लगाते parts, हैं this outlined डिस्काउंट key कूपन यूज 7 करके। chord in the bottom line, and a simple E minor scale अरे क्या figure above, भाई, together creating a क्या बात है, repeating आई गोट ostinato इट, figure. आई गोट What इट। makes it चलो interesting is the एक fact that ड्रैगन the एक top line परमानेंट हो is गई layered है। with an echo अब displaced by a full eighth note, क्या turning the लगाते हैं, line into a series हाँ of clusters एम फॉर that एवन give us this को 10 के ethereal ओपन किए quality. थे। अब उसी 10 की बारी, 10 हुए। अब दूसरी बार एक ही तरह मिलती है। चलो 10 और 10 20 नहीं मिली। When the melody and harmony 10 और come in, 10 it's 20 once again और common फिर से chord 10 tones का outlining स्पिन flat 6, flat 7, 1 progression with strings and choir, but the 30 constant presence of this नहीं initial figure among मिली। the changing फिर surroundings से injects the बारी whole piece with a powerful, mystical sound. 31 फिर से 10 की बारी। चलो चलते हैं, मिल जाए। अरे यार क्या 41 41 फिर से 10 ट्राई करते हैं। और मिल जाए बच्चे की जान लेगी क्या। अरे भाई Even though अरे the क्या emotional goal यार of this piece 51 couldn't के be ओपन more किए different फिर from भी his नहीं more मिल रही है। obviously देखो rock-influenced writing, यार, you can still see Sakuraba मारो मुझे, rely मारो on यार। harmonic and melodic conventions शिट of the यार, genre. An interesting 61 shift comes about halfway through the piece, where the original ostinato figure is मिल जा replaced यार। with अब a new क्या हो synth रहा है, line harmonized in thirds, 71 establishing a 5/8 time फिर signature. से मिल जाए कहते। यस आई गॉट इट फाइनली। 81 स्पिन लगाने के बाद ये मुझे मिली है। अब रहे हैं 3000 डायमंड। अब चाहिए मुझे MP40। चलो न्यू ईयर MP40 सबसे बेस्ट मिल जाए मुझे। चलो फिर से 3000 डायमंड वेस्ट करते हैं। MP40 में क्या परमानेंट होगी कि नहीं होगी। 2 गन तो हो गई है। फिर से अब चलो 10 क्रेट 10 क्रेट ओपन किए फिर भी नहीं मिली। चलो MP40 तो ठीक है। अब फिर से स्पिन लगाने के लिए जाएगी तो देखते रहिए। और आपको बता दूं कि डायमंड कैसे मिले। मैंने फर्स्ट बार
Rather than कितना using orchestral आई थिंक instrumentation 17 and स्पिन classical लगाए थे, harmonic 17 स्पिन conventions नहीं, to color traditional rock grooves, 17 prog rock 80 historically 17 used से rock 80 स्पिन लगाए instrumentation थे। and harmonic फिर मुझे conventions to मिला explore था the ए large-scale musical forms and other musical ideas 10,000 derived from डायमंड classical tradition. का It's mostly in boss fight जैकपॉट। themes where तो आप भी Sakuraba can लगाए really स्पिन, let loose आई with this थिंक stuff, and लकी that's आप where हो we गए see तो most of the odd time जरूर का जरूर signatures, मिल जाएगा। time signature पर shifts, कितने sudden key यूट्यूबर बोलते हैं changes, कि and घटिया virtuosic passages that have घटिया become hallmarks इवेंट है। of the prog rock style. नहीं, मैं तो The नहीं मानता, Satiros क्योंकि battle मुझे theme तो from मिला the है। original Golden Sun features all झूठ of क्यों these क्यों, things. मुझे मिला We इसलिए once बोल again रहा have हूँ। our driving फिर भी 12/8 अब feel at a blazing fast tempo with the piece आप flitting मानो या between ना the मानो, keys of E minor and मैंने A तो minor मतलब कि before अपनी landing हैसियत into the में key मैं of बहुत F छोटा sharp minor. यूट्यूबर हूँ जो इतने सारे डायमंड बाय कर सकता हूँ। तो फिर चलो देखते, आपकी मर्जी, आपको स्पिन लगाना हो तो लगाइए, ना नहीं लगाना तो मुझे तो मिल गया 17 से 80 स्पिन में। अब चलो MP40 के वो, अब यार लास्ट स्पिन हो गया यार, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अरे यार फिर भी नहीं मिली, क्या The देखते structure of the piece is ओ much शिट, more complex than the pieces we've looked at MP40 so न्यू far, ईयर and में this, मिली। along with the चलो use of अपना organ and कलेक्शन synth की ओर sounds, चलते really हैं। evoke that prog rock M41 sound. और The बहुत highlight of the piece यार comes about halfway through हार्ड with this स्क्रीन metric है modulation from 12/8 time यार, to क्या 5/4 बात time. है। A metric modulation is a चलो shift from अपने one time मतलब signature कलेक्शन to ही a दिखा new देता time हूँ क्या क्या signature अपने with a पास है। totally different pulse इसे flow भी feel, क्विक कर लेता one हूँ, that uses ड्रैगन a एक्वा common को भी। subdivision with the time signature before it. In the Satiros battle theme, the फिर 8th कुछ note अच्छा pulse from the मिल 12/8 जाता time है। is देखो maintained, इस but the घटिया accent is shifted to MP40 को every third 8th यार, note to every कितने second, and then the bar is डायमंड, cut from 3000 डायमंड 6/8 इसमें quarter वेस्ट किया, note फिर beats भी ना blank to परमानेंट only में 5. क्या करें। While this shift sounds incredibly jarring in the tune, if you चलो map out देखते constant चलता है 8th notes over this क्या करें। section, you'll find that they transition seamlessly between the two time signatures. If that's a little too square for you, take a look at the final battle with Doom Dragon theme from Golden Sun: The Lost Age. The piece is mostly in a sprightly 5/8 time, but regularly shifts to 3/8, 6/8, 7/16, and more. The melody is mostly a stream of 16th notes that arpeggiate the underlying harmony, occasionally breaking into more colorful scalar melodies harmonized in thirds. The hectic rhythms are paired with harmony that jerks you through different keys, diminished 7th chords flying at you with reckless abandon, and this perfectly captures the scale and intensity that a final boss battle should have. But there are pockets of really nice, relatable harmony and melody hidden among the craziness. I love this section in 5/8 that gives us a simple melodic figure of a walk up and back down 3 notes of the scale, repeated over an F sharp minor to C sharp 7 flat 9 over E sharp to E7 progression. Slowed down, this progression is really nice, and paired with the simple melody, it works really well as a sort of respite from everything that came before it. That is, before we abruptly jump into another metric modulation to 12/16 time over a D diminished 7th chord. Or how about the similar section that immediately follows, where we get 4 bars of truly evocative melody over this A minor chord before the tune breaks back into 16th note shredding. This is quickly balanced out with a harmonically ambiguous, dissonant 5/8 section that builds up the piece to its boiling point, climaxing with a torrent of unison 16th notes. In short, this tune kicks my ass in the best possible way. Having this kind of intense technical writing alongside the subdued mysticism of the Elemental Stars theme and the earnest heroism of the title theme is what makes the Golden Sun soundtrack so special.
Motoi Sakuraba has crafted plenty of musical worlds to accompany plenty of games, but perhaps none so stylistically diverse and musically cohesive at the same time. It's a perfect blend of influences that make up Golden Sun's musical identity while simultaneously showing Sakuraba's musical personality throughout the whole soundtrack, and I think that is something to be celebrated. Big thanks to patrons Ben Wong and Zoo for requesting Golden Sun. I missed out on playing the game when it came out, and catching up with its music was a real treat for me. If you'd like to join these two lovely and undoubtedly handsome gentlemen in supporting this channel, please consider checking out my Patreon page here. You can follow me on Twitter at 8BitMusicTheory, and if you're going to be in Boston on March 1st, you should definitely go check out the 8-Bit Big Band show happening at the Berkeley Performance Center. Not only will you get to see impeccable jazz orchestra arrangements of your favorite video game tunes, you'll also get to see my buddy Insane in the Rain present his arrangements of Pokemon Diamond and Pearl tracks with his Insane in the Rain Big Band. Grace Kelly and Leo P of Too Many Zoos fame will be joining as special guests. Really, all of the musicians on this show are just absolute monsters, so if you're able to go check it out, you won't want to miss it. Use coupon code MUSICTHEORY for $5 off your ticket. I'll put a link to the show in the description below. Anyways, thank you all for watching, and I'll see you all next time.